spark is all you need, and it's our destiny. ये ज़माना है हमारा, हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना, अपना जाना, हमने ठाना कि हाँ, we'll conquer the world, we conquer the world, we'll conquer the world, we'll conquer the world, we're gonna conquer the world. This is our moment and promises to keep. It's a spark that we live for. It's our destiny. It's our energy. जीतेंगे हम, ये ज़माना है हमारा, हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना, अपना जाना, हमने ठाना कि हाँ, we conquer the world, we conquer the world, we conquer the world, we conquer the world, we gonna conquer the world, we conquer the world, we gonna conquer the world, we gonna conquer the world, we gonna conquer the world. Spark Minda, powered by passion. Powered by passion every day. छूले हम आसमां को, ready for action every way. जीता हमने दिलों को, जो भी हो. We'll keep on winning, that's for sure. More and more, ये ज़माना है हमारा, हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना, अपना जाना, हमने ठाना कि हाँ, we'll conquer the world. Acceleration is a style, अब न रुके हम बढ़ते जाएं. We gonna conquer miles and miles and miles. चाहे हो तूफान तेज हवाएं, हम तो बढ़ते जाएं. Just a spark is all you need, and it's our destiny. ये ज़माना है हमारा, हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना, अपना जाना, हमने ठाना कि हाँ, we'll conquer the world, we conquer the world, we conquer the world, we conquer the world, we gonna conquer the world. This is our moment and promises to keep. It's the spark that we live for. It's our destiny. It's our energy. जीतेंगे हम, ये ज़माना है हमारा, हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना, अपना जाना, हमने ठाना कि हाँ, we'll conquer the world.
Spark Minda, powered by passion. Powered by passion every day. छूले हम आसमां को. Ready for action every way. जीता हमने दिलों को. जो भी हो, we'll keep on winning, that's for sure. More and more, ये ज़माना है हमारा. हमने ठाना, जीतेंगे हम सबने माना. अपना जाना, हमने ठाना. तो हाँ, we conquer the world. Acceleration is a style. अब न रुके हम बढ़ते जाएं. मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्री अनुपम महेंद्रो जी, माता जी श्री अशोक मिंडा जी, श्रीमती सारिका मिंडा जी और श्री बंसल जी और कनिका जी. बाबूजी का माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन. We only get one thing, that is the blessings of the people, and we want the people, the community, those are with us around our unit and production and plants, they should feel happy about this growth so that we give back to the society. मिंडा बालग्राम ऑर्फन चिल्ड्रन होम की स्थापना करी, जिसमें उन्होंने 2-2, 3-3 साल के बच्चे अलग अलग प्रांतों से लेके आए और आज के दिन उसके अंदर 100 बच्चे अपना अध्ययन कर रहे हैं, रह रहे हैं. मेरी शुरू से इच्छा रही है और मैंने बनाए भी हैं कि स्पिरिचुअल गोल भी, जिस तरीके से बिजनेस गोल, पर्सनल गोल, हेल्थ गोल इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल गोल भी इंपॉर्टेंट है. और मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है हर एक इंडिविजुअल से कि वो अपना जरूर स्पिरिचुअल गोल बनाए, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में. सक्षम केयर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी प्रोग्राम स्पार्क मिंडा फाउंडेशन का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है. इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम दिव्यांगों को असिस्टिव एड प्रोवाइड करते हैं और इसके अलावा उनकी लाइफ को डिग्निफाइड और सस्टेनेबल बनाने के लिए
उनकी स्किल ट्रेनिंग करवाकर एम्प्लॉयमेंट दिलवाने का भी प्रयास करते हैं। Today I am happy that one of your CSR activities of Artificial Limb Fitment Camp will enable many of our physically challenged brothers and sisters to regain their confidence and come back to face the challenges of life with new outlook. I also want to thank the various NGOs and all other companies, people who are engaged in this activity, who have worked hard and contributed remarkably to this noble cause. I wish all the best to everyone present here and good luck in the coming new year. Thank you very much. हमारे प्रोग्राम पार्टनर्स जो कॉरपोरेट्स हैं, एनजीओज हैं, जिन्होंने हमारी मदद की है अलग अलग जगह से यहाँ तक पहुँचाने की पेशेंट्स को, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं।
Good morning to all the dignitaries and members of Minda Corporation Limited. Sir, on behalf of the company, it is my proud privilege and pleasure to welcome you all at this extraordinary general meeting. As you are aware that we are living in a difficult time for society and for our economy. In view of outbreak of COVID-19 pandemic, social distancing norms are to be followed, and therefore we are conducting this AGM on virtual platform as per the regulatory guidelines. Now I would like to introduce the dignitaries participating in the meeting. Mr. Ashok Minda, Chairman and Group CEO, participating from New Delhi. Mr. Avinash Prakash Gandhi, Director and Chairman of Nomination and Remuneration Committee, participating from New Delhi. Mr. Rakesh Chopra, Director and Chairman of Audit Committee, participating from New Delhi. Mr. Ashok Kumar Jha, Director and Chairman of Stakeholders Committee, participating from New Delhi. Ms. Pratima Ram, Director and Chairperson of CSR Committee, participating from Bengaluru. Mr. R. Lakshman, Executive Director and Group CFO, he is participating from Mumbai. Mr. Akash Minda, our Executive Director, participating from New Delhi. And Mr. Sanjay K. Gupta, Deputy CFO of the company, is participating from New Delhi. Dear shareholder, I would like to introduce Mr. Suyash Singhania, representative of Messer BSR and Co LLP, statutory auditor of the company. He is joining from Ghaziabad. And Mr. Ranjit Pandey, who is scrutinizer for this EGM, who has joined us for this meeting from Gurgaon, Haryana. As per the information received from the NSDL, we have requisite quorum for this meeting. Now this meeting is called duly legally convened. Sir, kindly note that as for the smooth conduct of this meeting, the connection of all the members would be on mute mode during the meeting. Those members who have pre-registered themselves will be allowed to speak at the appropriate time during the meeting. And any query from the members will be answered by our chairman, Mr. Ashok Minda, or Mr. R. Lakshman, our Executive Director and Group CFO. Dear shareholder, notice for this AGM has been sent in electronic mode to members whose email addresses were registered with the company or with their depository participants. A certificate from the statutory auditor of the company, Messrs. BSR and Co LLP, certifying that the present issue of on preferential basis is being made in accordance with the requirement of Chapter 5 of SEBI ICDR Regulations 2018 and has been made available electronically for inspection by the members and will also be available during this meeting. Dear members, in compliance with Section 108 of the Companies Act 2013, read with relevant rules, and as per Regulation 44 of LODR Regulation 2015, remote e-voting facility was made available to the members from 28th November 2020 till 30th November 2020 to cast their votes on resolutions provided in the EGM notice. Members participating in the EGM through this virtual platform may cast their vote through e-voting system provided by NSDL during the EGM. Shareholder can opt for only one mode of voting, that is remote e-voting or e-voting at the EGM through NSDL platform. In case of voting by both the mode, voting done through remote e-voting will be considered final, and e-voting at EGM through NSDL platform will not be considered. E-voting window is now open and shall continue to be active for 15 minutes after conclusion of this meeting. Members are requested to exercise their votes by using e-voting facility provided by NSDL. Now I would request our chairman, Sir Ashok Minda ji, to kindly address the shareholder. Sir Ashok ji, over to you. Thank you, Pradeep. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to this extraordinary general meeting of Minda Corporation Limited on this day of 1st December 2020.
I hope all of you and your family are safe during this distressed time of pandemic COVID-19. As you are aware, no time can be called the most difficult time, because in the coming times, even more difficult challenges may have to be faced by the society. But we must understand that the efforts in difficult times are very fruitful in future. The board of directors and management team of your company has left no stone unturned during this tough time, and dedication and efforts are always towards enhance of stakeholders' value. This extraordinary general meeting has been convened to approve two special businesses. First business is issuance of 11.85 million equity share to 5 Capital Trust, 5 Capital Growth Fund 1, which is a category 2 alternate investment fund registered with SEBI. We expect to draw on this experience and expertise of the capital team to advise Minda Corporation and further its efforts of creating value for all its shareholders. 5 will support us in identifying value creation opportunities, performance management, financial planning, and long-term strategy to build and create long-term sustainable value. Minda and 5 will work together to form sustainable businesses and long-term value creation through operational partnership. Their investment in the company will only cement their commitment to help and support us in this endeavor. The fact that we have been able to get this investment definitely enhance our company's ability to look at larger investments, which will be important to fund our plans relating to developing and acquiring future technologies, competencies, and possible acquisition and investment. Second business for this EGM is for approval of appointment of Mr. Akash Minda as Executive Director for a period of 5 years and approval of remuneration. It will be further strengthen the board of your company. Necessary arrangement have been made for remote e-voting and also for e-voting during this meeting. Thank you for your patience, and I look forward to your unanimous support in passing the two resolution before you. Thank you very much. Over to you, Pardeep. Thank you, sir. Dear members, notice of this EGM read with 2 corrigendum dated 24th and 27th November 2020 were emailed to the shareholders with 2 special business to be considered and passed as special resolution. First one is to offer, issue and allot 1,18,57,143 equity shares, which are 4.96% of post-issue paid-up capital of the company on preferential basis to Fee Capital Trust, Fee Capital Growth Fund 1, which is a AIF Category 2 fund, non-promoter category. Appointment of Mr. Akash Minda, holding DIN 068707774 as an Executive Director of the company for a period of 5 years and approval of his remuneration for a period of initial 3 years of his term. Dear shareholders, the board has appointed Mr. Ranjit Pandey, practicing company secretary, as scrutinizer to supervise the e-voting process and declaration of results. The result of the e-voting will be declared and will be submitted to the stock exchanges and will be placed on the website of the company within prescribed timeline. Dear members, company has received registration request
from members as speaker at the meeting. Now we will allow pre-registered speakers, shareholder, one by one to speak and give their inputs or raise their queries. Members may please note that as the company reserves the right to limit the number of members asking questions depending on the availability of the time, members are further requested to wrap up their queries in 1 or 2 minutes to save the time. Now we will unmute Mr. Pradeep Sood. Thank you, Chairman sir. Can you hear me, Chairman sir? Can you hear me? Thank you. Yeah, you are audible, Pradeep ji. Yes. Yeah. Chairman sir, I can hear you. Yeah, Chairman sir, मैं प्रदीप सूद दिल्ली से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका और पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। चेयरमैन सर, इन पिछले 8 महीनों में हमने देखा कि कोविड-19 जैसी महामारी का प्रकोप भारत में बहुत रहा। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कंपनी भी फाइनेंशियली इफेक्टेड रही, हमारी कंपनी भी इफेक्टेड रही। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जिस बीते सालों जिस मेहनत, लगन, ईमानदारी से, कंपनी के लिए डिवोशन और डेडिकेशन से आप काम करते आए हैं, आगे आने वाले टाइम में भी आप इसी तरह से काम करते रहेंगे और कंपनी को फिर से ट्रैक पर लाकर खड़ा कर देंगे। हम पूरे फक्र के साथ, पूरी उम्मीद के साथ ये बात कह सकते हैं और हमें बहुत खुशी है सर। हमारी कंपनी ने बीते सालों जो ट्रैक रिकॉर्ड बनाए हैं चेयरमैन सर, वो ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है और आपने एक मिसाल बन के दिखाई है कंपनी। बाकी हमारे शेयर डिपार्टमेंट में, हमारे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट में हमारे कंपनी सेक्रेटरी साहब प्रदीप मान जी और प्रियंका मैम जिस मेहनत लगन से काम करती हैं और शेयर होल्डर्स की ग्रीवेंसेस हम उनको मेल करते हैं और पता चलता है मेल पे शाम को या नेक्स्ट डे उसका जवाब बिल्कुल ग्रीवेंसेस सॉल्व मिलती है। तो मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं कि हमारे प्रदीप मान सीएस साहब और प्रियंका मैम की जितनी तारीफ की जाए कम है। बाकी चेयरमैन साहब, मैं फिर से अपने साथी भाई अजय खुराना जी के साथ आपका शुक्रगुजार हूं और यही उम्मीद करता हूं कि हमारे आने वाले टाइम में हमें अच्छा रिटर्न मिले, अच्छा डिविडेंड मिले और हमारे शेयर्स को आप नई ऊंचाइयां दें। थैंक यू चेयरमैन सर, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। प्रदीप जी थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। जैसा आपने कहा, इम्प्रूवमेंट इज नेवर एंडिंग और हम लगातार इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि शेयर होल्डर की वैल्यू, आप लोगों की रिटर्न कैसे निरंतर इम्प्रूव करती होवे और कैसे ज्यादा से ज्यादा आपको लोगों को रिटर्न मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Our next speaker is Ms. Rama Jain, who is joining from Delhi. Rama Jain. Ms. Rama, are you there? Hello, ma'am. Are you connected to the meeting? Hello. Now we can move on the next shareholder, Mr. Manjeet Singh. हेलो सर, आवाज आ रही मेरी जी? या मंजीत जी, we can hear you. Yes, please. हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना सर आपको जी? ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, आपका सबका स्वागत है जी, वेलकम, गुड मॉर्निंग। और जो है आपकी ये जो ईजीएम आपने जैसे कोविड-19 के कठिन दौर के अंदर भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है, उसको आपने देखकर अपनी कंपनी में जो इन्वेस्ट करा है उसका हमारे जो है कंपनी पर अच्छा असर होगा और कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी। और जो है आपने एक्सपेंशन या कोई आगे काम बढ़ाने हैं, उस काम में ये जो है पैसा आ रहा है वो काम आएगा हमारे। और एक ये बड़ी अच्छी बात है कि 1 दिसंबर के अंदर जो आपने मीटिंग रखी है, इस दिन ऑटो कंपनियों के जो सबसे अच्छे आंकड़े होते हैं वो आज पेश होने हैं, क्योंकि जो के टाइम में मंजीत जी, योर कनेक्टिविटी इज वेरी पुअर। मंजीत जी, हेलो। ग्रोथ जो है काफी इंक्रीज होती है, आने जो है में पड़ेगा
के लिए अच्छा रहेगा। मंजीत जी, कनेक्टिविटी काफी पुअर है, ब्रेक है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है। हाँ बोलिए। अच्छा, पहले वाली। हेलो। अच्छा, जो मैं मंजीत जी पहले बोला, योर वॉइस इज ब्रेकिंग सर, वी आर अनेबल टू हियर यू। Sorry Manjeet ji, we cannot continue with your connectivity sir, sorry, we have to move on to next shareholder, Mr. Lokesh Gupta. Not there. Mr. Lokesh, are you there? Are you connected to the meeting? सब आपको सुना। Okay. Sir, our next shareholder is Mr. Pramod Kumar Jain. He is also not there. Mr. Ashok Kumar Gupta. He is also not there. And Mr. Santosh Bhutani. Yeah, Santosh ji, are you there? Can I speak, sir? Ji. Yes. I am Bhutani, sir. Yes, please. Hello. हाँ भूटानी जी, प्लीज we can hear you. Yes, please. चेयरमैन सर, हमने गत वर्ष में देखा और आपने हमारे एजीएम में जैसे हमारी अपडेट किया कंपनी के बारे में और कंपनी की आगे के फ्यूचर के बारे में, आप प्रोफेशनल शेयर ला रहे हैं, इशू कर रहे हैं, कंपनी के मसल पावर को बढ़ाने के लिए आपने कारगर कदम उठाए हैं। मैं ये समझता हूं कि आपके जो प्रयास हैं, the company has continuously focusing on its performance by way of cost reduction, revenue increase, maintaining cash liquidity, improving product quality, and achieving customer satisfaction. I think there is no question arised now this time. This is the time to pray for good health of all, and I wish, along with Mr. Juneja, we wish all the best for the future of the company and hope to see healthy growth in near future and size of the company under your leadership, Ashok ji, and your whole team. And I want to appreciate the efforts of the our CS branch team to help us to associate, to connect with this platform. अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मान सर, सबका मान, शेयरहोल्डर का सम्मान और एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हैं, ये हमें बड़ी खुशी होती है अशोक जी। और हम आपकी लीडरशिप में कंपनी को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं और आप सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और नए वर्ष पर ये जो बीमारी का जो अंत हो इस माह के अंदर ऐसी शुभकामनाएं, और ऐसा हमारे प्रधानमंत्री भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका इलाज हो और कंपनियां जो है अपनी अच्छी पटरी पर पहुंच जाएं, अच्छी गति पे पहुंच जाएं और कंपनी जो है तरक्की की राह पे और अग्रसर हो सके। और अशोक जी, हमें इन्हीं शब्दों के साथ आपकी रहनुमाई में हमें खुशी होती है कि हम आपके मेंबर बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे और हमें आने वाले समय में और अच्छी तरक्की मिलेगी, हमें और अच्छी एप्रिसिएशन मिलेगी, कंपनी की तरक्की के साथ हमें भी एप्रिसिएशन मिलेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अपने सभी साथियों के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद भूटानी जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इस डिफिकल्ट टाइम में और कंपनी को देखते हुए कंपनी के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करने की जरूरत है। हम करते आए हैं, करते रहेंगे भी, और आप जैसे शेयर होल्डर्स, आप जैसे इन्वेस्टर्स
कंपनी के ऊपर जो ट्रस्ट किया है, कंपनी के ऊपर जो पैसा लगाया हुआ है, डेफिनेटली मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, हम अपने निरंतर प्रयास करते रहेंगे। मेरी टीम के साथ, मेरे सारे सहयोगियों के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ डेफिनेटली इसको समय समय के ऊपर बेटरमेंट और ये देखते रहेंगे किस तरीके से मैक्सिमम रिटर्न हमारे शेयर होल्डर्स को मिले। आप लोगों का योगदान चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, बेस्ट विशेस चाहिए। वी विल कंटिन्यू टू कीप इट अप। धन्यवाद भूटानी जी। Thank you, sir. Sir, we have received one query from Ms. Rama Jain, who was one of the attendees, but she has not come to the video. She has raised the question that we all know that during this financial year, every industry is facing the impact of COVID-19. So I want to know that our board of directors considering about any right issue of the equity share. This is the question. Ashokji, with your permission. Yeah, please go ahead. Thank you, ma'am, for your question, and thank you, Pradeep, for reading this out. I'm very happy to share with you on behalf of the board and the management that your company is very well capitalized. It has a strong net worth and strong cash reserve. And therefore, today it is very well positioned in terms of funding as well as operational needs. I'm sure if at all there is any such need for a rights issue or such a requirement, I'm sure it will be considered by the big board at the appropriate time. Over to you, Mr. Minda, and over to you, Pradeep. Thank you, sir. Sir, we have taken all the queries from registered speakers, and thanks to all the speakers for their inputs and kind words towards the company and management. Thank you. In view of limited time, pending queries would be replied through email, and that whatever queries we have received through chat system. Thank you, shareholders. Now I would request Lakshmanji to kindly present a vote of thanks to the chair. Thank you, Pradeep. मेरा सबको नमस्कार दे दो। बहुत बहुत नमस्कार सबको। Thank you, sir. Just explain about Gandhiji, what Gandhiji said. मैंने कहा अशोक जी को सबको नमस्कार दे दूं। थोड़ा कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा था, तो फिर मैंने अभी किया, तो मैंने कहा सबको बता दूं। मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Thank you, Gandhiji. Thank you. Thank you. Lakshman, sir, over to you. Yes. Thank you, Gandhiji, and thank you for your kind words. And on behalf of the management of Minda Corporation, I thank our shareholders for gracing this event of EGM by joining through the web. The management of Minda Corporation also thanks the board of directors for their vision, untiring attention, and continuous guidance and foresight. I'd like to thank Messrs. BSR and Company LLP, statutory auditors of the company, and Messrs. Ranjit Pandey and Associate, the scrutinizer for this meeting. We thank you very much and really appreciate your efforts and sincerity. Thank you, everyone, shareholders, and all members for being virtually present. Over to you, Pradeep ji. Thank you, sir. Sir, now we are closing this event, and all the dignitaries are requested to leave the meeting. After 15 minutes, we will see whether all the voting is done, and the voting lines are open for next 15 minutes after this closure. Now it is 10:30 and the meeting will close at 10:45. Thank you, sir. Thank you, all the honorable directors and members. Thank you, sir. Thank you.